I request all participants to please keep the phone on silent mode. Good afternoon to all on the dais and off the dais. Today's guest speaker, Dr. Rajeshri Rao, the Vice Principal and HOD, Dr. Rupali Kanta Madam, our FDP Coordinator, Dr. Sheetal Godan Madam, all my dear colleagues and the participants, a warm welcome to all of you for the day 5 afternoon session. In the morning we had a DIIT visit and now let us have our second session. So briefly I will introduce today's guest speaker, Dr. Rajeshri Rao. Dr. Rajeshri Rao is Associate Professor and Head at Electronics and Telecommunication Department in Government College of Engineering, Nagpur. She is a graduate of 1998 batch and postgraduate of 2002 batch from Government College of Engineering, Amravati. And she has done her PhD in Error Control Coding in the year 2011. Recently, she is elected unopposed in Head Member category of RTMNU BOS for Electronics. She has 25 years of teaching experience and industrial experience of 1.5 years. Her achievements include Nagpur City Mayor Award as Woman Achiever in March 2019, ISTE National Award for Innovative Research in Engineering in 2017, ISTE National Award for Best Engineering Teacher 2013, RTM Nagpur University Best Teacher Award in 2011, IIFS New Delhi Shiksha Ratna Award in 2011, more than 120 research publications, 7 in SCI, 30 in Scopus journals, having more than 289 citations, H index of 9, I of 10, 6 patents published, 1 patent granted, delivered around 70 expert talks in engineering colleges. She has also delivered expert talks and chaired international conferences abroad in countries like Mexico, Dubai and Malaysia. She is the advisory and editorial board member for many international journals. 8 research scholars have been awarded PhD under her guidance. She is the only and first lady to represent IST Maharashtra and Goa section as SMC, that is Section Managing Committee. Currently she is Executive Council member of IST New Delhi. She is Executive member of IIT Nagpur. She is the Fellow of IEI, that is Institute of Engineers India, and Fellow of IIT. She has authored 2 books. One is Cognitive Radio, Basic Concepts, Mathematical Modeling and Applications, published by CRC Press, and other on Error Control Coding for Performance Improvement in BER. The project guided by Dr. Rao, titled Design of TSK System in Cognitive Environment, was awarded Best Engineering College Project Award for the Maharashtra State in February 2016 by ISTE. Her project titled Cattle Health Monitoring Systems received a grant of 1 lakh and was awarded Best Project of Vidarbha region and was presented at IIT Delhi as top 100 projects from all over India to be undertaken for large-scale implementation by Government of India. Other sponsored projects successfully executed by her include projects from Solar Industries Nagpur, Amitech Electronics New Delhi, Inotech Antennas Private Limited, and Crislov Tech Private Limited in association with IID, that is Indian Institute for Drones. She is well-known personality for her work in cognitive radio communications. I welcome you, ma'am, on behalf of our department. I would like to request our HOD ma'am to kindly felicitate Dr. Rao. Participants are eager for your session, so ma'am, so let's begin with show.
Last bench? Yeah, so mic, I think not needed. Okay? Fine? Yeah, I'll come down. So first of all, very good afternoon and thank you Rupali ma'am for a very nice introduction. It's an honor that I am here. I thank Rupali ma'am and the other coordinating members to call me over here because it's always a very good opportunity to interact with learning enthusiasts. Yeah. Forward. Yeah. It's always like every lecture teaches you something. After every lecture, I can imbibe certain improvements in my own presentation. So I enjoy coming and going everywhere and interacting with the researchers, the learners. First of all, simple questions like we are the survivors of pandemic, right? What did pandemic teach us? Which branch or what gain importance in pandemic? Obviously, it was electronics and telecommunication, computer science, right? Fine. And सबसे ज़्यादा it was the wireless communication, right? Fine. Because we were onto distance learning. हर कोई उस जो चीज़ हमने पहले कभी नहीं की थी वो हर कोई कर रहा था, छोटे बच्चे से लेके from the eldest member in the family. Though they were not learning, but they were interacting wirelessly, right? So जो कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था उतना क्राउड आपको वायरलेस पाथ पे मिला उस समय, right? The wireless path was most densely populated, almost densely crowded, I should say, in those days. Obviously, the demand on the bandwidth was highest. So that, in fact, gave the researchers what you can say a push that more work in this area needs to be done, so as to accommodate every demand in this area. Right now, whenever there is a roadway, जब भी रोडवे होता है तो हमको पता है कि रोडवे में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि कभी पेड़ होते हैं, sometimes it is the trees, sometimes it is the big huge buildings that you cannot extend the though we feel कि इसका it should be a broader pathway, it cannot be extended. So what comes to your mind is कि what can be done in such situations, right? Similarly, there are constraints in wireless pathway also. You cannot come down beneath a certain frequency, nor can you go above a certain frequency. Can anybody tell me why can't we transmit below a certain frequency? Yes. Antenna size limitation. Antenna size limitation. Yes, it's we are coming on to modulation, right? So why modulation? उसका ये है. हमने modulation क्यों किया? या फिर why modulation came to existence? Because we know that when it is a lower frequency, what we'll need? We will need a very huge antenna. Fine, the first thing. Then the other. This is one of the reasons. Then the other. Coverage area will be more. Quality of reception. Lesser bandwidth. Coverage area, range, right? So range with the lower frequencies is less. Can anybody give the basis equation for this? कौन सा इक्वेशन है जो मॉड्यूलेशन का बेसिस है? E is equals to h nu. Fine. So energy associated with the signal is equals to h into nu, the frequency, right? So where h is the Planck's constant. So if the frequency is less, obviously the energy is less, and therefore the signal cannot transmit to a longer range. Okay. So we have a lower limit. Can anybody tell me why we have an upper limit in the usable bandwidth? I'm talking of the usable bandwidth, like constrained wireless pathway. Why we cannot go beyond a certain limit? Device limitation. Okay, device limitation, fine. I accept. Loss of energy also. Loss of energy, can you justify? Ma'am, if you go beyond that limit, Hmm. so if the device is not capable of that limit. Okay, then means the energy device is will- constrained. Yeah, device constraints. Okay, then range will be high with higher energy. However, cost associated will also be high. Simple hai. The smallest, what you can say, component, electronic component, the power transistor, SL100.
and the normal transistor BC547147. See the difference. This is like 50 paisa on 1 rupee, that is around like 4 rupees, 5 rupees. SL100 is a power transistor. This I am talking of at the smallest electronic component level. When you go for the generation of frequencies, RF generator and the simple generator, RF generators you know are costly. Then you go for analysis. तो आपका जो 100 megahertz वाला CRO है, it is very much costlier than the 25 megahertz CRO, right? So analysis, generation, everything becomes very costlier affair as we move towards higher frequency. Then the greatest and the most, what you can say, crucial and important focus is the hazards. The hazards associated at the higher frequency. So, meaning that I want to stress upon the fact that yes, the wireless pathway is also a constrained pathway. तो ये constrained pathway अगर है, क्या हम इसको judiciously use कर रहे हैं? Are we properly fitting everything into a trunk? हमारे पास जो भी trunk है, तब कैसे होता था बचपन में? We used to pack a bag and then we used to find difficulty in putting certain things. Then mama आती थी and then used to say, wait, art of packing. So, like you have to fill the void spaces, right? So here also you have to fill the void spaces. Now you will question, where are the void spaces? Yes, there are the void spaces. You are having several channels on your TV sets. Are you utilizing them fully? No. Because it is hardly 6 or 7 channels, those are tuned, right? Rest you never tune. God का चैनल आप हार्डली लगाते हो, आस्था आप हार्डली लगाते हो. मतलब क्या कि पाथवे बना है बट आप यूज नहीं कर रहे. Somebody is paying for them, has paid for it, because if it is a licensed band, that means it is a purchased band, right? Even you are paying for it, क्योंकि आपने वो लिया है ना, सब्सक्राइब किया है, बट हम लोग यूज नहीं कर रहे. So somewhere मतलब we are not properly utilizing the usable bandwidth. So it's an underutilization of the bandwidth. I'll first discuss and then we will go through the PPT, okay? PPT will be like a recap. Fine? So I hope you are comfortable with this. Yes. हो गया. फिर अभी कैसा है कि ये तो पता चल गया कि हम underutilize कर रहे हैं. Fine? इसका एक example पूना में भी है. You are very पुणे people are very conversant with it. जो बस ट्रैक है उसके लिए आपके पास अलग ट्रैक है, right? Very often you feel अरे बस नहीं आ रही है, जाने दो ना, ये लगता है ना आपको. तो अभी उन लोगों ने क्या किया, एक ओपनिंग ऑफ दी एक कर दिया, मतलब एक बैरिकेड लगा दिया, और उनको पता है अगर इफ द बस, if there are less chances of the bus coming in the near future, they open up the barrier and they allow the other users, other vehicles to go through that bus track. Exactly ये हमको कम्युनिकेशन में करना है. ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना, exactly वही हमको कम्युनिकेशन में करना है. We nowadays और currently हमारा जो स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन है या स्पेक्ट्रम अलोकेशन पॉलिसी जो है वो कैसी है? हाउ इज दैट पॉलिसी? दैट वी आर अलोकेटिंग अ फिक्स्ड बैंडविड्थ टू एन एप्लीकेशन, अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज टू एन एप्लीकेशन, एंड दैट एप्लीकेशन हैज टू ट्रांसमिट ऑन दैट बैंड. जैसे टीवी, कैन एनीबडी टेल द सेंटर फ्रीक्वेंसी फॉर टेलीविजन? अंदाजे फ्रीक्वेंसी अलग अलग बैंड में VHF बैंड है. No, television is 200 megahertz. Okay, popular FM band बताइए. 100. 88 to 100, right? Then mobile 1800, 900, 800, 900. Okay, fine. That means every application is tied up with a frequency band. This kind of spectrum allocation is called as a static spectrum allocation policy. Fine, ये क्या है? It is a static spectrum allocation policy wherein an application has to transmit in its own band. Okay? But however, need वो है कि अगर वो रास्ता खाली है तो that should be utilized. कौन से रास्ते खाली है? टेलीविजन वाला रास्ता खाली है. Fine. So a mobile, and the most crowded one is the mobile one. So mobile users should be able to transmit on the television band. This should be a possibility. What is the technology that makes this possible? That technology is the cognitive radio technology. Got it? Fine. So, dynamic spectrum allocation was made possible by cognitive radio technology. Dynamic means what?
like on demand. जैसे requirement है वैसे spectrum would be allocated. Now, if it is like dynamic spectrum allocation, then why don't we call this radio as dynamic radio, something like that? Where from this name cognitive has come? Can anybody answer? Because we are sensing the frequency of the channel. Okay. It is cognition. Sensing. Yeah, prediction. Sensing is prediction. Yeah. So, sir was very close. You are also very close. Adaptability is to changing circumstances. Fine. So, yeah. Whenever we have to take a decision, we have to use the mind, means we have to use the cognitive domain of our Exactly. We have to think, we have to predict. Okay? So, cognitive science is a science which takes decision in the present depending upon or predicting what is going to happen in the future. And this is what exactly this radio does. वो predict करता है what are the chances of the bus coming on that track, and then only it opens that track for the normal users. तो कितने chances है कि God channel को का tuning होगा? Fine. Sorry, I have to just put it on. Sorry. So, what are the chances of the bus coming on that track based on that predictions, that probability you are opening the bars? What are the chances of a person tuning to God channel or a particular receiver set or a particular locality tuning to a particular station or particular channel, and according to that channel is opened up for mobile transmission. This is what is done in cognitive radio. So, cognitive radio utilizes the cognition knowledge or the science of prediction, and therefore it is called as the cognitive radio. Got it? Now, I am talking of like moving from 800-900 megahertz to 200 megahertz. Currently, we are just switching from the complete 800 to 900 or the 1800 to 1900. इतना ही tuning हम कर रहे हैं. Fine. So it is possible with that hardware device. Do you think with the available device हम उतना tuning कर पाएंगे? What are the basic tuning elements? इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. तो सोचो कितना बड़ा गैन कैपेसिटर लगेगा, कितना बड़ा वेरिएबल रेजिस्टर लगेगा अगर इतना ट्यूनिंग करना है. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज द थिंग विच गिव्स सच दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी? इतना फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे सकता है हमको? सॉफ्टवेयर, राइट? सो कॉग्निटिव रेडियो फंक्शनल किस वजह से होता है? इट बिकम्स फंक्शनल बिकॉज ऑफ द एलिमेंट SDR, software defined radio. It's a heart and soul of the cognitive radio. SDR, what is SDR? SDR is a transceiver device which has maximum operations implemented by software with bare minimum generic hardware. What does generic word mean over here? जनरल जो सबको लगता है. अब जनरल सबको क्या लगता है? तो LNA लगता है, लो नॉइज एम्पलीफायर लगता है, एंड क्या लगता है? तो एंटेना लगता है. बिकॉज सॉफ्टवेयर हम ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, सो वी डेफिनेटली रिक्वायर अ रिकॉन्फिगरेबल एंटेना. गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉग्निटिव इज द SDR. नाउ लेट अस ट्राई टू डिफाइन अ कॉग्निटिव रेडियो. कॉग्निटिव रेडियो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. उसके पहले लेट मी टेल यू, डज एनीबडी नो हु इंट्रोड्यूस कॉग्निटिव रेडियो? जनक कौन था इसका? इट वॉज जोसेफ माइटोला इन 1998. हम और आप जैसे पेपर लिखते हैं वैसे ही बंदे ने पेपर लिखा और उस पेपर में ये कंसेप्ट थ्रो किया. अब उसने जब कंसेप्ट थ्रो किया तो इट वॉज पर्टेनिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. प्रॉब्लम क्या हो रहा था? ही वॉज रिसर्चर एंड दे हैड लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक द प्रिंटर. फिर उनका वो XY राइटर होता था उस जमाने में. फाइन. मतलब प्लॉटर, बेसिकली दे वांटेड अ प्लॉटर एंड दे वर 10 to 5 रिसर्चर्स. ठीक है, यूजर एंड में प्रोग्रामिंग के लिए उनके पास इंडिविजुअल टर्मिनल था, बट ये चीजों के लिए दे वर लिमिटेड. सो देन इट वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम कि भाई ये भी फ्लाइट फ्लोट कर रहा है, वो भी फ्लाइट फ्लोट कर रहा है.
वो नेटवर्क में था, सिस्टम नेटवर्क में थी, तो a queue is to be formed and sometimes jumbling होता था, and then nobody used to be served. मतलब जो ये हो रहा है, what you can say, congestion on the network is kind was happening. So he thought of defining an algorithm कि भाई इसका रिक्वायरमेंट कब है, इसका रिक्वायरमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए है, उसका रिक्वायरमेंट कब का है, यानी वो जो प्रोग्राम कर रहा है उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कितना टाइम लग रहा है, तो एग्जैक्टली कब उसको उस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये सब उसने स्टडी किया. अकॉर्डिंगली ही डिवाइस्ड अ मेथड टू intelligently configure his PDA, his personal digital assistant, so that the resources can be properly shared with the all users in the lab. So such that कि भाई resources का time भी waste ना हो, and जो use कर रहे हैं उनका जो requirement है वो भी properly cater हो. तो इस चीज को, because here also it was involving study कि उनको कब लग रहा है and for how much duration, right? So this way he throwed into the concept of cognition, fine, making his PDA computationally intelligent to know about the resources and to best possible use the resources to cater the needs of the clients in the network. Okay, and then this was further extended in communication to be utilized for a transceiver device. And now we define, in simple terms, we define cognitive radio as a transceiver device which is intelligent enough to sense the surrounding. क्या करता है वो कि सराउंडिंग जो है वो सेंस करता है. अब सराउंडिंग सेंस करता है मतलब क्या, विच इज अवेयर अबाउट और विच हैज द इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज द सराउंडिंग. तो व्हाट डू यू थिंक इन द सराउंडिंग शुड बी नोन? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, the available spectrum, fine, then whether it is in a position to transmit, fine, उसके पास में वो सारे devices है क्या, क्योंकि think of a digital communication system. digital communication system में क्या क्या रहेगा बताइए? सोर्स एनकोडर, फिर चैनल एनकोडर, फिर मॉड्यूलेटर, फिर डिकोडर, फाइन. तो ये सब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए होना जरूरी है हमारे पास, क्योंकि मैं तो भाई 800 के लिए मेरे पास है, लेकिन अभी मुझे 200 पे जाना है. तो डू आई हैव अ मॉड्यूलेटर which is capable to work at 200? So all this it has to check. Okay, fine. So which knows what its surrounding environment, and in response to this environment can react to the conditions. React means what? Can transmit at the available frequencies. Okay, so simple terms mein it is an intelligent transmitter receiver device, transceiver device, which can understand its operating environment and can react to its operating environment, and accordingly react to its operating environment. Okay, got it? ये simple हो गया. फिर माइटोला, जोसेफ माइटोला का definition तो मैंने आपको बताया ही. और एक ग्रुप है which is the SDR forum all over the globe, which is continuously working to make this technology a commercial technology. आज भी ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल नहीं है. It is just utilized for military applications in Europe and in US. Okay, दो ही जगह ये military applications के लिए यूज हो रहा है, लेकिन आप और मैं अभी कॉग्निटिव रेडियो यूज नहीं कर रहे. फाइन. जिस दिन आपका मोबाइल अगल बगल के मोबाइल को सेंस करके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएगा, तब वो कॉग्निटिव डिवाइस बन जाएगा. गेटिंग इट? फाइन. दैट इज द फाइनल टारगेट ऑफ द कॉग्निटिव रेडियो. सो इस पे जो फोरम काम कर रहा है, एसडीआर फोरम, उन्होंने भी अपना एक डेफिनेशन दिया. अब हम थोड़ा सा पीपीटी देख लेते हैं, बिकॉज इट शुडंट बी अ मोनोटोनस टॉक. Okay, so we'll go through PPT until this point, and then again we will discuss. Fine? Yeah. So this was the beginning. Yes, we are really blessed. We are survivors of pandemic. It is a pleasure to address young and talented brains listening and trying to learn what we did in pandemic. The distance learning itself speaks about the need of today's topic. So friends, we are discussing today 5G based cognitive radio. Okay.
Yes, and then the for test, no. Receiver connect. Yeah, that is Bluetooth. No problem, I will move there. Okay. It's okay, it's okay. We did not operate that time. No problem. It's okay. I'm comfortable with the problem. नहीं ये नहीं रिपीट कर रही हाँ अच्छा से स्वरूप बोला बोला it's okay no problem we should try to sell fine so here we are 5G based cognitive radio and this is the outline the present state of the wireless world, the opportunities, 5G to cater increase data traffic, and advantages and disadvantages of 5G, the CR technology. Okay, so I always begin with one of the truth of life. Difficulties line up. This is my statement. The difficulties line up and get triggered as a circuit sequential. Difficulties line up and get triggered as a circuit sequential to explore your hidden potential. Okay, so we are electronics engineers, so we can line up in that way. Fine, so it's working. Thank you. So ये तो हमने देखा ही है. पहिली स्लाइड है ना, तर नेक्स्ट स्लाइड हाँ, fine. So we are in the wireless world, the era of mobile communication. Every rising sun registers a beyond limit increment in the mobile data traffic. The global mobile data traffic will be approximately 49 exabyte per month by 2021, and it is already reached. It was even beyond that because of the pandemic. Then the mobile device has turned as a teacher, turning your mobile into your online classroom. This is all that we have experienced in the pandemic situation. Fine. So this all justifies the crowd over the wireless channel. So all teachers, for all students, less time wasted in road traffic, technology knocking your doors, total paradigm shift, then virtual shrinking of the world to your computer. So we have experienced all this, but this all needs, what it needs is a higher bandwidth. And 5G is a rescue for that. 5G has been a, what you can say, been very much successful in doing this, but along with the hazards that have come forward. Okay, the day when 5G was tested in Germany, thousands of the birds fell down. Do you know that? Have you seen that video? मैंने जब वो टेस्टिंग फेज में था, तब अगल बगल के सारे जो पंछी थे वो गिर के कोलैप्स होके नीचे गिर गए. फाइन. सो दिस इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. ये तो ऑब्वियस आप भी देखते हो. आधी म्हणजे स्पॅरो चिमणी बघायला मिळायची, आता बघायला नाही मिळत. त्याच्यानंतर क्रोज हार्डली वी सी क्रोज, राइट. सो ये क्यों है भाई? ये कभी आपने सोचा है की भाई का चिमणी आता दिसत नाही? तर हे सगळे गेले, कुठे गेले? कारण बिकॉज दीज रेडिएशंस डोंट हेल्प देम टू सर्वाइव. ओके, फाइन. सो एंड हमको भी जो हो रहा है वो स्लोली हो रहा है, लेकिन nobody is thinking over the hazards of the RF radiations. And 5G talks of the 8.3 gigahertz transmission. Do you know 8.3 gigahertz का मतलब क्या होता है? आपकी जो गन शॉट होती है ना, whenever bullet is fired from a gun, fine, तो वो जिस स्पीड से ट्रैवल करती है, that is 8.3 gigahertz. तो वो gigahertz पे अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इट मे नॉट कॉज ब्लड इंजुरी, फाइन, क्योंकि गन शॉट में वो बुलेट में मास है, तो ऑब्वियसली आपको इंजुरी दिखेगी. ये इंजुरी आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन इट पेनिट्रेट्स द स्किन. इट डेफिनेटली दोज रेडिएशंस आर पेनिट्रेटिंग योर स्किन, बट यू आर नॉट नोइंग व्हाट इफेक्ट इट इज कॉजिंग इमीडिएटली. धीरे 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 समझ में आता है.
Okay, fine. So high bandwidth and speed are the need of the hour. 5G to cater the increased data traffic. इसके advantages, disadvantages. 5G launched in December 2018 in South Korea. It is a promising technology with specification 20 gigabytes per second is the download speed with only 1 milliseconds latency. I hope everybody knows what is latency. Fine. So 1 million devices per square kilometer मतलब एक सेल का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा डेफिनेटली. फाइन. अभी फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है इंडिया में, फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है. ओके फाइन. 5G will use spectrum in the existing. बाहर तो 6G भी आ गया लेकिन इंडिया में 5G अभी पूरी तरह आया नहीं है. 5G will use spectrum in the existing LTE frequency 600 MHz to 6 GHz. अपना पूरा 4 GHz पे ही चल रहा है अभी. 6 GHz and above हम नहीं यूज कर रहे हैं. एंड ऑल्सो इन दी मिलीमीटर वेव बैंड 24 to 86 ये यूज नहीं हो रहा है अभी. We are just on to the 4 GHz band. Okay, fine. It has advantages like the next major phase of mobile telecommunication and wireless system. Expected speed up to 20 gigabits per second. Dynamic information access. Possible to provide uniform, uninterrupted and consistent connectivity across the world. But however, it is more known for its hazards, and for the reason till December 12, 2019 was banned in many countries like Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, and even in US. अभी use कर रहे हैं वो लोग because they have devised the global transmitters for that. क्योंकि frequency high है तो inherently power ज़्यादा है, but then they are curtailing the transmitter power so that it can cause less damage. Okay, fine. Then the disadvantages: incompetent technology support in most parts of the world, replacing old devices with new ones. Security and privacy issues yet to be solved in 5G. Lower power of 5G transmitters, meaning more antennas. I told you the only way to implement is lower power transmitters. Fine, because अगर high power transmitters ये करोगे तो damage will be beyond imagination. Fine. High risk of health hazards from radio frequency. It can cause radiation sickness, burns, cancer, and even genetic damage. That is also noted. Okay, fine. So 5G networks will support the coexistence of multiple standards. ये statement बहुत important है यहाँ पे. This is what integrates 5G with the cognitive. It supports multiple standards means what? That 5G devices and 5G transmitters can transmit at even 800 megahertz and they can transmit even at the 4 gigahertz. This is what makes it cognitive. Because in cognitive, we are talking of that, changing of the frequency, right? So this is the blending of the two technologies. Okay? So, and coordinate with various site types, okay, micro, macro and pico base stations. A premier challenge of 5G network design has been created to create a network architecture capable of supporting this kind of flexibility while meeting the multifaceted access demands on an IoT network or IoT future. Okay, fine. So this gives a reference of articles published. Okay, so 5G, do we utilize the current bandwidth efficiently? We are talking of 5G which is targeting 83 gigahertz. Fine. टारगेट तो उतना है कि भाई सर्वर पे तो भी डेटा उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है या इट इज लाइक प्लान्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट वे. बट हमने क्या किया कि हमने पेड़ तोड़ डाले, हमने घरों को गिरा डाला और हम रास्ते बढ़ा रहे हैं. लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो अवेलेबल रास्ता है क्या वो फुली यूटिलाइज हो रहा है. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट? लोगों के घर तोड़ डाले, पेड़ तोड़ डाले और रास्ते बढ़ेगी. बट अरे अवेलेबल रास्ते जो आपके पास में थे, क्या आपने उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन किया? ये सोचेंगे. सो a safer implementation of 5G is what is the cognitive, is through cognitive radio technology. बट रहा है आपको? Are you getting it? Are you getting the connect of 5G and the cognitive radio? आ रहा है समझ में? 5G is the need of the hour. लेकिन as it is 5G अगर implement करोगे तो it will be a major problem. But if you blend the two technologies together, you can target a safer implementation of 5G. You can just search this topic. Many papers will get on this safer implementation of 5G through
cognitive radio. So researchers can concentrate on if at all you want to give a research topic or you yourself are delivering research, this can be a research topic or you can integrate this in your research. So this is what we studied, inefficiency of the spectrum utilization, underutilization of the available spectrum. So what you see on this screen is the survey by Ofcom people. जो मैंने आपको बोला कि जितना bandwidth, जितना भी trunk size है वो properly use नहीं हो रहा है. There are many void spaces. Okay, fine. तो void spaces आपको दिख रहे हैं in the form of the blue color. Blue color is 0 dB. That means no transceiver device are tuned on that frequency. It is a simple S/N measurement, signal to noise ratio measurement. Fine. अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो इस पे सिग्नल नहीं है, मतलब what you can say the S/N value is 0 or somewhere in the moderate level, and when it is fully utilized it is brown. Fine. तो fully utilized है transceivers tuned up है, तो brown कितने दिख रहे हैं आपको? The frequencies which have the brown color are very less. If you don't mind, all of you are very senior professors over here, but हम सब लोगों ने खाना खाया है. It's a natural tendency that you will feel drowsy. तो थोड़ा सा उठ जाइए. सब लोग will just get up. I can understand. I can well understand that it's a theoretical topic. थोड़ा सा उठ जाइए. Just जो हम drill करते थे ऐसा कर सकते हैं आप. करिए, मेरे साथ करिए, नो प्रॉब्लम. करिए, नो प्रॉब्लम. एंड आपके अंदर का जो बच्चा है उसको जगाइए. एवरीबडी हैज अ चाइल्ड इनसाइड, तो उसको जगाइए. फाइन, ओके, फाइन, ऑल फाइन, ओके. सो दिस इज इट कि भाई प्रूव है कि हमारा रास्ता प्रॉपरली हम यूज नहीं कर रहे. ओके, तो रिसर्चर्स ने भी उसको प्रूव किया है ग्राफिक्स. देन कम टू द डेफिनेशन कि हमने पढ़ा. फाइन, इन सिंपल टर्म्स, a cognitive radio is a transceiver device that is able to understand and react to its operating environment. तो operating environment में जो कुछ भी आता है वो स्क्रीन पे है. The propagation environment, the equipment capabilities, the interference, the cost, the regulatory norms. अब regulatory norms क्यों? क्योंकि ये कैसा है पता है क्या, कि मान लीजिए कि आपके पास पूना में घर है. फाइन, यू हैव अ फ्लैट इन पूना एंड यू आर ट्रांसफर्ड टू सम अदर प्लेस. तो आप जो पूना का फ्लैट है आपका वो वैसे ही छोड़ोगे क्या? नहीं. आप क्या करोगे? दिस इज गिवन, दिस पीपीटी इज गिवन, मैंने को दी है और गूगल पे भी है. तो नो हम आप मेरा नाम डालिए, आप पीपीटी और कॉग्निटिव वीडियो डालिए, सब मिल जाएगा. मेरे बुक के 30 पेजेस जो बेसिक्स है वो फ्री एक्सेस है. फाइन, यानी फॉर अ बिगिनर जो लगता है वो पूरा ओपन एक्सेस दिया है. फाइन. सो लाइक कैसा है कि अगर वो घर खाली रखा है तो इट इज व्हाट यू कैन से नाउअडेज जो आपका एसेट है, सबसे हाईएस्ट एसेट इन एनीबॉडीज लाइफ इज द हाउस, राइट. और आप उसको खाली छोड़ोगे क्या? अगर आपको पता है कि आपका ट्रांसफर हुआ है, मतलब एटलीस्ट 1 साल तो भी आपको दूसरी जगह रहना है, तो इट विल कम टू योर माइंड कि भाई आई विल रेंट इट आउट. फाइन. तो ऐसा ही यहाँ पे हम करते हैं. और अगर रेंट पे देते हैं तो आप क्या लिखवाते हो? एग्रीमेंट. तो रेगुलेटरी का यहाँ पे भी वो सब होगा. यहाँ पे भी हाउ मच शुड बी पेड, व्हाट टाइम शुड बी, एंड देन फर्दर एक्सेसिंग के लिए इट शुड नॉट बी ओपन. राइट, मतलब अनऑथेंटिक एक्सेस नहीं होना चाहिए. तो वो सब कंस्ट्रेंट्स, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे रहेंगे. फाइन. देन अवेलेबल सिस्टम्स, यानी कि मान लीजिए कि आपको हैदराबाद हाईवे मिल गया जाने के लिए. फाइन. और आपके पास मारुति 800 है. हैदराबाद हाईवे और या फिर समृद्धि मार्ग 800 के लिए थोड़ा सा मुश्किल है भाई. मतलब सोचेंगे ना लोग कि भाई टायर वायर ना जल जाए, गाड़ी गर्म ना हो जाए, ये सब आएगा ना. सो वो कैपेबिलिटीज जो है अवेलेबल सिस्टम्स वो देखना जरूरी है कि जो बैंड मुझे मिला है उस बैंड पे ट्रांसमिट करने की क्षमता मुझमें है या नहीं. डू आई हैव दी ट्रांससीवर डिवाइसेस which can transmit. Transceiver devices includes what?
the source encoder, the modulator, the channel encoder, ये सब मेरे पास है या नहीं, because हर रास्ते के मतलब the hurdles on every path are different, right? Correct? So same is the case with wireless communication. The noise on every path is different, and you need to have equipments to cater the noise, right? Then the user requirements. इतना सब करके क्या मेरे user requirement cater हो रहे हैं या नहीं, ये भी उसको देखना जरूरी है. Got it? Fine. So what is the intelligence that is required of the transceiver, और ये सब अगर आपके डिवाइस में है तो ही आपका डिवाइस कॉग्निटिव रेडियो कहलाएगा. Okay? Fine. What is the interface and propagation environment? How you can change that? हाँ, see कैसा है कि propagation environment means what? The frequency. The frequency over which you are transmitting. Fine. And because see, for with frequency again everything is related. I mean the data transmission rate. Immediately what comes with frequency is the rate of transmission. So if you are transmitting at a higher data rate, again you should have the available facilities with you. Okay. And then interference means what? See, if you are on a particular band, what are the other? How much far are the other users? Co-channel users जिसको हम बोलते हैं, हाँ, co-channel users जिसको हम बोलते हैं, co-channels जो होते हैं ना, users transmitting simultaneously. How far are they from you? Right? Multiple users are transmitting in wireless channels, right? Yes. So if you are using a particular band, then you should see that the co-channel users, how far they are from your band, and do you have the capabilities to take care of the co-channel interference. Co-channel interference, Yes. the crosstalk and all. Yes. Fine. So if you have a guarded channel, if you have proper encryption techniques, that is what means. But the guard channel is different for different frequency band. Definitely. Let's say for 2 to 30 megahertz, if I Yeah, take, yeah. that guard band limit is say about 1 kilo. Yeah. If I taken in 400 megahertz band, it is something like 5 kilo. Right. If in upper 800 megahertz band, it is up to 10 kilo. Yeah. So guard band will be different. Exactly, you're saying the same. I mean, your own doubt has the answer. I had a opportunity, or I was accustomed to transmit with a guard band of say 100 kilohertz. But now I have to transmit with a guard band of say 50 kilohertz only. Yani co-channel user is very is in Close. proximity. Right. So do I have the encryption techniques to take care of the crosstalk? This is what it means. Do I have techniques to take care of the interference? It might be an unintentional interference, it might be an intentional interference as well. Jamming जिसको हम कहते हैं, वो भी हो सकता है. तो ये सब चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेरे पास में फैसिलिटीज है? Right? Yes. In propagation environment, do you want to say regarding the Propagation environment is the frequency at which you are transmitting. Yes. The band over which you are. band? Yes. And what interfaces are called? Interferences over that band. Interferences means how far is the co-channel user from that band, and are you capable of meeting those interferences? Meeting in the sense the catering of those interferences. Yes. Yeah. Got it. How 5G is safer with cognitive radio? Because 5G will not target it. With cognitive radio, 5G will not increase the frequency. Fine, it will only increase the bandwidth. चैनल बैंडविड्थ अगर बढ़ गया तो आप डेटा रेट बढ़ा सकते हो, क्योंकि कॉग्निटिव क्या करता है, एम्प्टी स्पेसेस ढूंढ के निकालता है. और अगर हाइयर डेटा रेट पे आपको ट्रांसमिट करना है तो आपको बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए. आ रहा है समझ में? ओरिजिनली 5G वाज ट्राइंग टू इंक्रीज 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड उसको करना है. फाइन, उसके लिए वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है. यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाओ भाई, जो रास्ता है वो रास्ते की विड्थ बढ़ाओ. फ्लाईओवर मत बढ़ाओ, इसी रास्ते की विड्थ बढ़ाओ. आ रहा है समझ में कैसे, कि जो खाली है उसमें के वो जोड़ दो. Are you getting it? Fine. It is somewhat like that ADAP network. ADAP network is actually the way cognitive radio works. कैसा है? I'll tell you one of the application on which CG is working basically. आपका जो it's quite confidential one, but still I can tell.
सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है ना, इंटरसैट कम्युनिकेशंस, वहाँ पे एडॉप नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है यूजिंग दी एडॉप नेटवर्क्स, आई मीन दी टेम्पररी इंस्टॉल्ड बेस स्टेशंस ऑन दी सैटेलाइट्स. And underwater also the same thing is being done. Underwater communication with RF is still, I mean, is still an area of research. Underwater किससे communication होता है? Can anybody tell? It is US ultrasound or it is through light. अभी Li-Fi is being used, fine. But still RF के बारे में किसी ने अभी कुछ भी confidently predict नहीं किया. But cognitive radio is targeting that also, underwater communication, by setup of adopt networks. Ma'am, I Yes. have a question. Just before some time you said कि number of cancer patients are increasing just because of development of the technology. If that technology will be implemented, completely implemented with the help of cognitive radio, means whether it will be the chances of less number of patients of the cancer? Definitely, जो भी hazards है. अब देखो कैसा है ना कि हम on the user end we say that. But those who are promoters of the wireless communication, they say, do you have a crisp, what you can say, analysis of or proof that RF is causing the cancer? Just because. हाँ, I mean yes, definitely. यानी हम लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हमने 5G इससे implement कर दिया, and if the results come out in that way, अगर हम 2 साल का एनालिसिस करें और हम 10 भी लोग हम दिखा दें कि 10 people less are now suffering from cancer or have developed cancer, तो we will be in a state of मतलब proving कि yes, in a closed area, in a bounded area, कि हमने क्या किया कि पहले 5G as it is implement किया, बाद में 5G हमने, हाँ, तो ये ऐसे स्टडीज करने पड़ते हैं. फिर दिस इज ऑल एट रिस्क. मैं आपको एक और बताती हूँ. इसका एग्जाम्पल, ऑल वायरलेस टेस्टिंग इज डन ऑन रैट्स. आई होप यू नो दैट, राइट. तो एक प्रेग्नंट रॅटला एक्सपोज केलं गेलं RF रेडिएशन्सला, फाईन. आणि दुसरी प्रेग्नंट, म्हणजे तिथे काहीच नाही, आपण जे 800 वर ट्रान्समिट करतो ना, तर 800 वर 800चा ट्रान्समिटर तिथे लावण्यात आला. And then in the other, I hope all of you understand the Marathi. Each one of you, nobody has. Okay, fine. So, and in the other cage, it was 4 gigahertz, and in another cage, it was no transmitter at all. I mean, completely RF radiation free environment. फिर जो बच्चे आए बाहर, fine, उनका फिजिकल कंडीशन चेक किया गया. 4 गीगाहर्ट्ज वाले जो बच्चे थे ना, त्यांचे हातपाय, एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी. हमारे यहाँ ये गुरुचली सरांच्या मॅडमच्या कॉलेजमध्ये ना, त्या कॉलेजचं नाव माहिती का, तिथे टेस्टिंग झालं. अँड इट वॉज KM Gurchandi sir from VNIT was associated with this. I don't know how many people know him. Was associated with this research. Okay, so वो जो 4 gigahertz वाले जो बच्चे थे, उनके हाथ पैर ऐसे पर लाईक असं फ्लेक्झिबल होते. दे कुडंट इवन स्टँड, आणि म्हणजे असे कसे म्हणजे समजलं ना, म्हणजे काही स्टर्डीनेसच नव्हतं त्यांच्या हातपायांमध्ये. ते सर जेव्हा असं सांगत होते ना, ही वॉज लिटरली इन टू टीयर्स, क्योंकि आखिर में हम तो उनके साथ खेल रहे हैं ना, लाइक आई मीन गिनी पिग हो रहा है ना वो. सो बट ये चीजें करनी पड़ती हैं टू शो दी क्लेमर्स दैट RF रेडिएशंस आर नॉट हार्मफुल. Those who claim that RF radiations are not harmful, अगर rats के लिए है तो भाई हमारे लिए तो है ही, definitely है. So Does this that is mean it. that it affects bones? Does that mean that it affects bones? To some extent, yes, definitely yes. Cervicals चे पेशंट वाढलेले आहेत, ब्रेस्ट कॅन्सरचे पेशंट्स वाढलेले आहेत. I hope all of you agree to this. That's Disability. Ear disability. Ear disability. हो. यंगस्टर्स मध्ये ती सवय असते, त्यांना पुष्कळ जणांना तो इश्यू येतो. इथली एक नर्व आहे जी डॅमेज होते बेसिकली. दे डोंट नो, बट देन वो पूछते हैं कि आर यू हैबिचुअल टू दी पुटिंग द ईयरपॉड्स. द आंसर इज येस. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी एज researchers need to focus on.
सो हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ RF रेडिएशन, ये भी एक आपका रिसर्च का टॉपिक हो सकता है. यू शुड टेक इट इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर PhD. आस्क योर स्टूडेंट्स टू डू इट, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोसाइटल बेनिफिट. सो इस पे काम करना चाहिए. For this, you can tell कि where are the measurement facilities available? It's a very good topic. फार्मसी तुमचं जे आहे ना, फार्मसीमध्ये सगळं होतं. तर तुम्ही क्लब अप करा फार्मसी लॅबसोबत. तिथे या प्रकारचे टेस्टिंग बरेच होतात, पण तुम्ही क्लब नाही करत. काय होऊन जातं की आपले RF टेस्टर्स तुम्ही तिथे घेऊन जात नाही. त्याला थोडंसं ते लागतं, रेजिस्टन्स असतो कधी कधी, पण क्लब अप तुमचं स्वतःचं कॉलेज आहे. आमच्याकडे आमचे एम्स आणि NIT बरेच प्रोजेक्ट्स सोबत करतात. सो यू कॅन क्लब अप विथ दी मेडिकल ब्रांच अँड इवन डेंटल, म्हणजे डेंटिस्ट लोक पण तुमच्यासोबत बऱ्याचदा गोष्टी करतात. Actually, when ma'am just me continuation given कि okay, I want to test these people, right? But what is the problem that they are having a different DNA, they are having a different health, means जे खाता डाएट तर डिफरंट आहे. Obviously, खूप see. डिफिकल्ट जातं ना रिझल्ट म्हणजे Yeah, yeah. I'm करायचं telling you म्हटलं. कि whenever you are doing a study, you have all other factors also affecting. So it's a prediction. The analysis is a prediction. It cannot be, I mean, hypothesis ज्याला आपण म्हणतो. It will be an hypothesis. It cannot be a solid mathematical proof because there are several other parameters which are working. Fine. Even दोन ट्विन्स पण सारखे नसतात. तर मग म्हणजे I cannot. So it is that way. आता तुम्ही जे रॅट्सचं म्हणाल, पण इट वॉज म्हणजे त्यांची सायकोलॉजिकल हे करण्यात आली. दे वर क्वाईट सेम इन द्या फिजिकल हे फिटनेस. तीन ज्या हॉबीज होत्या रॅटच्या, तर तिघांची स्टेट ऑफ फिजिक जे होतं ते म्हणजे दॅट वॉज फर्स्ट रिटर्न ऑफ मॉनिटर्ड अँड देन ऑफकोर्स फाईन, म्हणजे थोडंफार त्यांच्या स्वतःच्या फिजिकली पण फरक असेल, पण इतका तिचे बच्चे एकदमच Why I'm telling this because the COVID, one paper is published that COVID is because of 5G testing. आणि हे त्यांनी पेपर दिलेला. Yeah, I also read it. आणि आता 6 महिन्यानंतर त्यांनी अपॉलॉजी दिली IEEE की हे म्हणजे खोटं आहे, म्हणजे एवढं चालू आहे. पण त्याचं कारण हे होतं की तुम्ही जर म्हणजे त्याचं जे बायोग्राफ जो म्हणतो ना आपण, त्या ग्राफमध्ये जी रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी होती दॅट वॉज समवेअर मॅचिंग युअर अदर फ्रिक्वेन्सीज. ते तुम्ही जो पेपर म्हणताय ना त्याचं तुम्ही नीट वाचलं असेल तर ते जे मॅचिंग होतं त्याच्यामुळे त्याचं ते प्रिडिक्शन होतं. म्हणजे आता प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने त्याला म्हणजे त्याचं रिझन फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करत होता. इट वॉज जस्ट अ ट्राय अँड व्हॉट माइट बी द रिझन. सो इट इज लाईक दॅट. यू नेवर नो व्हॉट कम्स आउट. ओके, fine. So this is it. So it was a wonderful discussion. So this is Michaela's definition. I have already explained the same to you. He just tested his or made his PDA computational intelligent. Okay. This is the ये यहाँ से अभी फिर से हम explanation शुरू करेंगे. SDR forum is a forum of people like me, Ravindra sir, Adrish Banerjee, Aditya Jagannathan, who are continuously working for the commercialization of the cognitive review. Fine. इसमें throughout the globe people can connect. अब उसमें कनेक्ट होने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है. आपने जो भी काम किया है उसको आपको फ्लोट करना है बस. You get a login password. They ask you to provide your material to them, and then they keep you updated with whatever is going on. Sometimes they share their what you can say. They ask your suggestions कि what do you feel about this particular thing. ऐसा वो फोरम काम करता है. तो अब ये SDR फोरम ने इसको जो डेफिनेशन दिया है ना कॉग्निटिव का, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कैसा है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्विच टू अ एम्प्टी स्पेस, तो दो सिचुएशंस यू विल फेस. समटाइम्स I will have to tune up with a lower bandwidth, and sometimes I may get a very huge bandwidth. ऐसा होगा ना. कभी कभी मुझे बस वाला ट्रैक मिल जाएगा बहुत बड़ा वाला, या फिर कभी कभी हो सकता है कि मुझे एकदम छोटा सा नैरो ट्रैक मिले फॉर ट्रांसमिशन. अब दोनों सिचुएशंस में आई शुड बी एबल टू ट्रांसमिट. इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसमिशन नहीं रुकना चाहिए. फाइन. सीमलेस कनेक्टिविटी हम जो बोलते हैं SEAM LESS, फाइन, यानी विदाउट ब्रेक. ओके, वो इज आर टारगेट. तो दोनों सिचुएशंस में अगर मुझे ट्रांसमिट करना है
तो क्या जरूरी है भाई, ये SDR फोरम का डेफिनेशन बताता है। तो जब नैरो बैंडविड्थ है तो ठीक है, लॉसेस तो होंगे, बट देन उस लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश मैं करूंगी। फाइन। अब लॉसेस कैसे कैसे पचमढ़ी का गुप्त महादेव किसी ने देखा है? गुप्त महादेव वाला रास्ता देखा है, पचमढ़ी वाला? फाइन। उसमें मैं ऐसे जा सकती हूँ क्या? नो, आई हैव टू गो लाइक दिस, और उसमें भी झुक के। क्यों? क्योंकि द स्लिट इज वेरी नैरो, इट इज अ स्लिट ओपनिंग बिटवीन टू व्हाट हिल्स। फाइन। तो आई एम इंटैक्ट, ओनली थिंग इज माइनर मुझे कंप्रेस करना पड़ रहा है। तो मैथमेटिकली इट्स अ कंप्रेशन, बट इंटैक्टिबिलिटी ऑफ डेटा इज देयर। फाइन। सो व्हेन आई इंटरप्रेट देयर इज नो चेंज, हाउएवर व्हेन आई मैथमेटिकली एनालाइज देयर इज अ चेंज। ओके फाइन। तो ये चीजें आपको करनी है कॉग्निटिव में, कि अगर नैरो पाथवे मिले तो इन सम वे आई ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस। फाइन। SDR फोरम सेज दैट इट इज अ टेक्निक वेर इन you try to at least minimize the losses or improve the performance. परफॉर्मेंस इंप्रूव कब करेंगे भाई? कि आपको हैदराबाद हाईवे मिला है और आप 60 और 80 के स्पीड पे जा रहे हो, या समृद्धि मार्ग मिला है और आप 60 और 80 के स्पीड से जा रहे हो। नो, यू आर बाउंड टू गो एटलीस्ट एट 120 किलोमीटर पर आवर, राइट? फाइन। सो तो अब इस पे ट्रांसमिट करने के लिए एट दैट स्पीड अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो यू शुड हैव द कैपेबिलिटीज। हाई स्पीड तो बेटर चैनल एनकोडिंग टेक्निक्स, राइट? आई होप यू नो दैट कि अगर आप वो जो इक्वेशन है आपका C इज इक्वल्स टू B log of 1 plus S by N, C is the channel capacity, B is the bandwidth and S by N is the signal to noise ratio. अगर bandwidth ज्यादा है तो definitely I can transmit at a higher data rate, but then as soon as I transmit with higher data rate, I am bound to face errors. Fine. So I should have what? Better channel coding techniques. Fine. So this is what SDR forum says, that a radio that in some sense has awareness of changes in its environment, in response to these changes adapts its operating characteristics in some way to improve its performance, yani when bandwidth is higher than the minimum required, and or to minimize a loss in performance. Means agar it is a narrow bandwidth, yes. मैम जैसे कि नैरो बैंड और ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये ट्रांसमिशन होगा। ओके। आम यूजर्स के लिए तो जब अवेलेबल होगा ज्यादा स्पेस तो वो ज्यादा का इस्तेमाल करेगा, और लोअर नैरो बैंड होगा तो नैरो मिलेगा। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हमेशा हाई स्पीड और ज्यादा डाटा रेट और ज्यादा बैंडविड्थ की अवेलेबिलिटी हो तो वहाँ ये काम करेगा। कैसा है कि एवरी एप्लीकेशन नीड्स अ बेयर मिनिमम डेटा रेट। फाइन। ओके। सो if I want to transmit at data rate and I have a lower bandwidth, so what I will I will go for data compression technique. Data compression technique क्या करता है कि important data ही लेगा, यानी क्या डेटा साइज कम कर रहे हो। फाइन। तो डेटा उसी मतलब information rate is same. Are you getting it? When I am compressing the data, rate of information will be the same. एग्जैक्टली वही बता रही हूँ, हमेशा हाई वही बता रही हूँ। सी कैसा है कि रिडंडेंसी अगर आप डेटा की रिमूव कर दो, फाइन, तो इंफॉर्मेशन रेट जो है वो आपको सेम मिलेगा, यानी रास्ता छोटा है लेकिन वही डेटा वही इंफॉर्मेशन जो है, जो काम की इंफॉर्मेशन है उतनी ही मैं ले रही हूँ। फाइन। एंड वो छोटे से जगह से भेज रही हूँ। सो इंफॉर्मेशन रेट को मैंने डिटर नहीं होने दिया। कैसे नहीं डिटर होने दिया? मैंने हायर एंड कंप्रेशन टेक्निक्स लगाए। अब इसका एग्जांपल देती हूँ। टू एन एक्सटेंट जब हम ये CLP यूज करते हैं, कोड एक्साइटेड लीनियर प्रिडिक्टिव कोडिंग टेक्निक्स, पता होगा शायद आपको। हाँ, रिडंडेंसी इन द सेंस बताती हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग एक्चुअली, तो ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ 3 तरह के वॉइसेस का रिकॉग्निशन होता है, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस एंड अ चाइल्ड वॉइस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लिटिल बिट टू डिजिटल कम्युनिकेशन। फाइन। अब इसमें कैसा है की मैं क्या बात कर रही हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टंट है। माझ्या आवाजामधली